Good morning, good afternoon, good evening. Hello friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 5th Marigold book में chapter है Unit 6 का Class Discussion written by Gervais Finn. अब इसके अंदर बताया है this is for you to recite and improve your vocabulary and about it's written about a student named Jane in a class. जब discussion चल रहा है she was silent all the time. टीचर उससे पूछ रही है समथिंग रॉन्ग विथ यू और उसका एक्सक्यूज क्या है, लेट अस व्यू दैट. तो क्लास में यूजुअली जब टीचर क्वेश्चंस पूछती है हम लोग पीछे छिप जाते हैं, किसी फ्रेंड के पीछे बैठ जाते हैं, बट व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू neglect our teacher. So that is something very wrong what is explained here. So let's understand this chapter. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. टीचर बोल रही है जेन को कि क्लास डिस्कशन जब हुआ था तुमने मुश्किल से एक वर्ड भी बोला. We all had our opinion, but from you we barely heard. हम सब ने अपने अपने एक टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियंस दिए थे. We all were telling about something about the topic, but we did not hear you at all. Barely मतलब बिल्कुल नहीं. We did not hear you at all. You sat and stayed in silence, surrounded by the chatter. All the time when everybody was speaking, everybody was chitting chatting around you, what were you doing? You were sitting silent. ये एकदम से silentable क्यों बन गए थे तुम? Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? Now, is there anything the matter? मतलब टीचर पूछ रही है अब मेरे को ना प्लीज जेन बिल्कुल प्लेनली बताओ, कोई रीजन कोई एक्सक्यूज मत दो, मुझे बताओ what is wrong, प्रॉब्लम क्या है. Jane looked up and then she spoke. जेन ने सडनली ऊपर देखा और बोला. Her voice was clear and low. उसकी वॉइस क्लियर थी लेकिन बहुत लो टोन था. There are many people in this world who are rather quiet, you know. जेन ने रिप्लाई ये दिया कि मैम इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शांत स्वभाव के हैं. Probably I am one of them. वहाँ जो चिट चैट चल रही थी, पिटर पैटर चल रही थी बच्चों की, she did not like it, she did not like feel like saying anything, so that was the reason probably she was quiet. And the excuse that she gave, my God, this excuse was marvelous. बहुत ही बढ़िया excuse दिया था जेन ने, my friends. टीचर कुछ बोल भी नहीं पाई होगी. I'm really sorry about all the teachers out there. I really don't want to make fun, but this is the chapter and this is the hilarious expertise of a girl giving an excuse. कोई जवाब नहीं. Now let us go to question and answers. What activity was going on in the class? क्लास में क्या एक्टिविटी चल रही थी? The answer would be that the class was having a group discussion. Who was quiet one in the class? Who was quiet one in the class? So Jane was the quiet one in the class. Why was she quiet? Options दिए. She was afraid to air her opinion. She hated the noise. She did not like the activity. She was quiet by nature. तो यहाँ पे जेन ने जो रिप्लाई दिया है ना वो यही है that she was quiet by nature. How do you perform in the class during the discussions? Do you participate or do you remain quiet? अब यहाँ पूछा how do you interact in the class during the discussions? Do you, my friends, आप इसमें आंसर ऐसे लिख सकते हो. Yes, I actively participate in class discussions and I don't like remaining quiet, but I only speak when I feel I am speaking correct. इस तरीके से यू कैन फ्रेम अप योर आंसर. नाउ इसके बाद में हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. यूज क्लूज इन द बॉक्स. दिस एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द स्टूडेंट्स बेसिस हिमसेल्फ, माय फ्रेंड्स. नाउ व्हाट इज अ डिस्कशन? इसका आंसर बताया. टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग. व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन. आप अपने दोस्तों के बीच में प्लान बनाते हैं. शाम को तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, या साइकिल चलाने के लिए मिलेंगे, या फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में आएंगे. This all discussion when 3 or more friends together talk about one topic, that is called a discussion. Now, read the sentences below. They tell us what happened in a discussion. You can read the sentences. इसके बाद में you can discuss the things around you and the exercises can be done, my friends. अब fill in the grid given below by assigning qualities to person some clues. संगीता लेंस अ पेंसिल टू हर पार्टनर. तो संगीता के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? संगीता इज हाउ शी इज. बेसिकली यू कैन से शी इज जेनरस. शी इज नॉट ब्रेव, नॉटी, क्वाइट, टॉकेटिव, जेनरस और स्टूडियस. सो शी इज जेनरस. नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटरबॉक्स, मतलब टॉकेटिव.
प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ही इज ब्रेव, यस, लेक में कूद के. मेघा इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ नीरव, तो नीरव इज बेसिकली अ चैटर बॉक्स, सो मेघा इज ऑपोजिट, सो शी इज क्वाइट. मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन, माय गॉड, ऐसे भी होते हैं क्लास में कुछ, तो उनको हम कहते हैं नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल, सो शी इज, मिथिला इज नॉटी. Now, children who show exceptional bravery are honored with Bravery Award to recognize the presence of mind. In 1957, the Indian Council for Child Welfare started these National Bravery Awards. Yes, 1957 में National Bravery Awards चालू कर दिए गए थे और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको 26 जनवरी को वहाँ बुला के इनको कैश प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स देते हैं स्कूल से ले जाके. अब यहाँ पे हर्ष के बारे में बताया है that they ride on an elephant on Republic Day parade and all. Harsh Srivastava, 12-year-old boy, and his 15-year-old sister rescued a child from attack of a raging bull. इन दोनों ने एक बुल भागते हुए आ रहा था, एक बच्चे को बचाया था, हर्ष ने और उसकी बहन ने. Yumnan Jaydev Singh, 11-year-old, jumped into the flooded river and saved a 3-year-old boy from drowning. The act of bravery was recognized because he saved the life of an infant. अब 3 साल के बच्चे को डूबने से बचाना एक 11 साल के बच्चे का बहुत अच्छा एक्ट होता है. So what he did was exactly the same thing. He went ahead and helped a little boy. So this is bravery that can be. Now, find one story of bravery about a child. You can search the story by talking to older people or watching a TV program or from a film. Write down the story, also mention its source. You can go ahead and write down. There are many stories. I'll give you the hint of stories that you can go ahead and watch and then try to save it out. You can go ahead and watch movies like Stone Boy. That's a good movie. You can watch Pink Pigeon. You can watch Jack and the Beanstalk. This is a good bravery story, my friends. Yes, this is very good. Or you can simply read Red Riding Hood. It's all about bravery and all things. So here basically the chapter ends. Still अगर कोई doubts है तो you can go ahead and contact me. I'm Kevin sir. I'm available on WhatsApp. I'm available on Instagram or Snapchat, whatever you feel like comfortable, या आप डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग बैक. अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा दैट नाउ फ्रॉम आवर चैनल वी हैव बीन प्रोग्रेस्ड एज सर्विस प्रोवाइडर्स टू वेरियस स्कूल्स फॉर द कंटेंट्स. इसी सीरीज में वी आर डेवलपिंग दिस Marigold class 5th. We have started with this thing, English literature. We'll be having many other subjects as well. You can just check out the playlists. If you are interested for personal classes or any such association, please go ahead and contact us below. Thank you very much. It's a little effort from our side. Take care.